Good morning, children. Welcome back to our English class. Now here is a beautiful poem, How Creatures Move. So see the beautiful pictures around the poem. The creatures means the human and of course the animals. Each and every creature that has been created by God, they all are having the quality, children, to move from one place to another. See, for human example, God has given us legs to walk from one place to another. Similarly, the animals also, they are having their legs, 4 legs, or even the sea animals also, they are having the wings. Every birds are having wings and fins. Every creature is having each and everything. With the help of that body part, they use to move from one place to another. Hope you liked the helping video in the last video that I have sent. Now here is a beautiful poem. I am going to recite the poem, then I am going to explain the poem. Before that, children, I would like to tell you that this poem is not being included for the final exams. This is only for you to learn for your knowledge. So I am just going to recite the poem. The lion walks on padded paws. The squirrel leaps from limb to limb, while flies can crawl straight up a wall, and seals can dive and swim. The worm he wiggles all around. The monkey swings by his tail, and birds may hop upon the ground or spread their wings and sail. But boys and girls have much more fun. They leap and dance and walk and run. So the very first line is telling us about the creature lion. How lion used to walk with the padded paws. See in the picture, see the lion is having 4 legs, and if you can have a look with the paws, उसके जो पंजे होते हैं बेटा वो बहुत ही पैडेड मोटे होते हैं और उसकी मदद से उनके पैरों में कोई चीज़ चुभती भी नहीं है और वो आराम से चल सकते हैं. Then coming to the creature, the squirrel leap from limb to limb. एक जगह से दूसरी जगह, एक टहनी से दूसरी टहनी. देखो जैसे squirrels, what is the meaning of squirrel? The गिलहरी, वो फुदकती रहती है. Then while flies can crawl straight up a wall. Here the flies, मक्खियों के बारे में है कि वो इधर उधर crawl करती हैं. Then seals can dive and swim. Now here is a picture of a seal. Seal is a sea animal. समुद्र का जानवर एनिमल है. वो डाइव भी कर सकता है, बहुत गहरी तैराकी जिसे हम कहते हैं, डाइव भी कर सकता है और स्विम भी कर सकता है. Then the worm he wiggle all around, means here we are talking about the worms, कीड़े मकोड़े. Then the monkey swings by his tail. Here monkeys play with the help of the tail. एक पेड़ से दूसरे पेड़ वो कूदते रहते हैं with both the hands and both the legs. They use in both the forms. See, a monkey is climbing on the tree with the tail. Then and birds may hop upon the ground. Birds are having 2 legs. वो फुदक फुदक के हॉप करके चलती हैं और spread their wings and sail. और या अपने परों को फैला के, हम देखते हैं जब वो ऊंची ऊंची फ्लाइट लेती हैं, ऊंची उड़ान भरती हैं, तो अपने परों को फैला के खूब ऊंचा सा उड़ जाती हैं. Then the line has been explained for us. Now here all the lines are being explained for the animals. All the quality, the about lion, squirrel, गिलहरी के बारे में, fly मक्खी के बारे में, seals के बारे में और birds के बारे में. Now here 4 lines are for human beings, जो हम और आप हैं, and we are really very much blessed and gifted by the gift of
legs. With the help of legs, children, see how beautiful moments, how beautiful things or actions we can do in our day-to-day life. For moving one place, see, have you observed a very small child कि वो पहले धीरे धीरे क्रॉल करना सीखता है, धीरे धीरे अपने पैरों और हाथों की हेल्प से चलता है. लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ मदर और फादर और एनी एल्डर वो उनकी उंगली पकड़ के धीरे 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 चलना सीखता है. एंड विद द ऑफ कोर्स द हेल्प ऑफ 2 legs. ऊपर वाले ने, भगवान ने हमें 2 पैर दिए हैं जिससे हम डिस्टेंस को कवर अप कर लेते हैं और चलना सीखते हैं धीरे धीरे. उन्हीं पैरों की हेल्प से छोटे बच्चे या जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वी कैन हैव अ साइकिल राइड, हम साइकिल चला लेते हैं. इवन वी कैन हैव अ क्वालिटी ऑफ, इफ़ यू बीइंग लवर ऑफ डांसिंग, आप अपने पैरों की हेल्प से अच्छे मोमेंट्स कर सकते हैं, अच्छे एक्शंस कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, आप जंप कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू बी अ गुड athlete, yes, then also legs plays the important role in your life. उनकी मदद से आप इतने तेज़ दौड़ सकते हैं that you can be a good athlete also. Even in swimming also the legs or the hands play the important role. So here 4 lines are explained. But boys and girls, so the poet is telling us, जो बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां हैं, उनके पास और भी फन करने को है. Have much more fun. They leap and dance and walk and run. वो सिर्फ चल ही नहीं सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह कूद भी सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं. सो द पोएम इज ऑल्सो गिविंग अस द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल्स एंड द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. सी, बोथ आर हैविंग द लेग्स, both are having the quality of movement. Nature, we both are creatures. God has given us the quality to move from one place to another. But the thing is that we people, we humans are quite different from them, from the animals, because we are gifted with 2 legs. With the help of this 2 legs, we cannot even move. हम सिर्फ चल ही नहीं सकते, बल्कि हम अपनी खुशी से डांस भी कर सकते हैं, जंप भी कर सकते हैं, कूद भी सकते हैं और हम दौड़ भी सकते हैं. Okay, children, so this is all in this poem, how creatures move. In your rough copy, you are going to write 6 lines of the poem. No need to write it in your classwork copy. Okay, so the new words are padded, limp, crawl, dive and wiggles. So again I am reading the poem for your recitation. How creatures move. The lion walks on padded paws. The squirrel leaps from limb to limb, while flies can crawl straight up a wall, and seals can dive and swim. The worm he wiggles all around, the monkey swings by his tail, and birds may hop upon the ground, spread their wings and sail. But boys and girls have much more fun. They leap and dance and walk and run. So children, enjoy the poem. Meet you in the next video. Be happy and be